Dear student, welcome back to the series of lecture on online lecture on the heat exchanger. Today we will learn about the effectiveness method. Yesterday we had learned about the in the previous lecture we have learned about the LMTD method. So today we are going to minimize this section because of the recording. Okay. So okay. So in this section we are going to analyze the effectiveness of NTU method. This method was proposed by Cage and London, which in which there was the outlet temperature of hot and cold fluid were unknown. So this method, effectiveness method, is also called as number of transfer units method. So effectiveness, what is the effectiveness? Effectiveness of a heat exchanger is simply a non-dimensional quantity and it represents the performance parameter. What is the performance? How? That means it will represent how effective a heat exchanger is. Means if uh, later on we will define, then we will understand what is the exact meaning. So if okay, effectiveness, what is the effectiveness? Effectiveness is defined as the ratio of actual heat transfer to the maximum possible of heat transfer. That means that heat exchanger, how much heat transfer that is possible by the use of that particular heat exchanger. But actually, how much heat transfer that heat exchanger is doing. So between these two relations, the effectiveness term is defined. So effectiveness is represented at epsilon, which is simply Q upon Q max. So Q is the actual heat transfer and Q max is the maximum heat transfer that is possible for the heat exchanger. So Q you can determine by using the simply energy balance equation. What is the energy balance equation? That is the Q is equal to C delta T for the hot fluid as well as cold fluid. And what is the Q max? How we will determine the Q max? Q max is determined what is the maximum possible that heat transfer is that heat is possible. So how? What is the maximum possible? Q is the product of heat transfer is the product of capital C heat capacity rate into delta T. Suppose heat capacity rate depends on the types of the fluid. So for the given amount of heat, the higher the heat capacity rate, lower will be the temperature difference. So if for the given heat exchanger, which is having a specified amount of heat capacity, if the length is continuously increased, then there will be the more surface area available for the heat transfer between the hot fluid and cold fluid. So the total amount of heat transfer will get increased up to what? Suppose we increase this amount of heat, this amount of heat transfer surface area that is available. If we increase to the infinite, in that case, the maximum temperature heat transfer will take place. Now, the hot fluid will lose maximum heat transfer and cold fluid will get equal amount of heat transfer. So, suppose there is the maximum possible heat transfer for the given infinite length is Q max. So, for that Q max, which fluid will experience maximum temperature difference? That Q max is equal to heat capacity rate multiplied by the temperature difference. The fluid which is having lesser heat capacity rate would experience maximum temperature difference. The fluid which is having lesser heat, higher heat capacity rate would experience smaller temperature difference. Therefore, that Q max, suppose we have the hot fluid and cold fluid. Assume the, okay, del, say, see, here it is the two cases. One is the hot fluid and another is the cold fluid.
we assume that hot fluid, there are the two possibility. Either cold fluid has higher heat capacity rate or hot fluid has the higher heat capacity rate. There are the two possibility. We will analyze both one by one. First, we will assume the maximum heat capacity rate is for hot fluid. Again, we will assume the maximum heat capacity rate is for cold fluid. In that case, if hot fluid is having maximum heat capacity rate, then it would experience lesser temperature difference. If hot fluid has higher heat capacity rate, means the cold fluid will have lesser heat capacity rate, and the cold fluid in turn would experience larger temperature difference. See, पहला cases क्या है? CH is greater than CC. In that cases, CC is minimum and CH is maximum. That is the higher than this. CH is higher and CC is the lower. That means cold fluid heat capacity rate is minimum. So for the given heat transfer rate, the cold fluid would experience maximum temperature difference. That means TC inlet is there. Now it will experience maximum value of heat transfer. So TCI, what is the maximum temperature that cold fluid would attain? कितना होगा? Hot fluid दे रहा है, उसका कितना ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर मैक्सिमम हो सकता है? कोल्ड हॉट फ्लूइड के इनलेट के बराबर. कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट बढ़ते 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 किससे हो सकता है? हॉट फ्लूइड के इनलेट के बराबर. कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कभी भी हॉट फ्लूइड के मैक्सिमम टेम्परेचर से नहीं बढ़ सकता है. सो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कोल्ड फ्लूइड का बढ़ करके हॉट फ्लूइड के बराबर. सिमिलरली अगर सेकंड केस की बात करें जिसमें कि हॉट फ्लूइड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है कोल्ड फ्लूइड से, यानी इसमें जो जिसका किसका मिनिमम है हीट कैपेसिटी रेट, तो हॉट फ्लूइड का. अब हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा. हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? वो मिनिमम कहां तक जा सकता है? उसका टीएचआई तो है ही है. अब ये जो पहले टीएच आउटनोट के पास रुकता था, अब ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक चल जाएगा? इसका इतना ज्यादा लोड हिट करेगा कि जो टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड के इनलेट के बराबर है. क्यों? कोल्ड फ्लूइड के इनलेट से कभी भी कम नहीं हो सकता है. Therefore, अगर हम दोनों का रिलेटिव करें तो एक्चुअल Q विल बी Q और Q दोनों अपना इनलेट और आउटलेट के टेम्परेचर के केस में है. अब जब इस केसेस में क्या होगा? जो मिनिमम कौन सा हुआ इस केसेस में? सीसी और इस केसेस में सीएल. तो ये जो सीसी का टर्मिनोलॉजी है उसका आउटलेट टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा? हॉट फ्लूइड टीएचआई, मतलब Q इक्वल टू सीसी टीएचआई माइनस टीसीआई. इसमें भी क्या हो जाएगा? और सीसी क्या है? सी मिनिमम है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू मैक्सिमम जो पॉसिबल हो जाएगा सी मिनिमम टीजीएचआई माइनस टीसीआई. अगेन इस एक्सप्रेशन की बात हम करें तो क्यू इक्वल टू सीसी इंटू टीसी नॉट माइनस टीसीआई है. अब इसमें टीसी आई का इनलेट के बराबर कितना हो गया है? टीसी टीसी हाँ इसकी बात हम करते हैं. क्यू इक्वल टू सी एच टी एच आई माइनस टी एच नॉट. तो टी एच नॉट के बराबर कितना हो जाएगा? टीसीआई के बराबर. तो ये जो क्यू मैक्स हो जाएगा सी मिनिमम, यहाँ पे सी मिनिमम किसका है? हॉट फ्लूइड का है. देयरफॉर हॉट फ्लूइड के बारे में बात करेंगे. हॉट फ्लूइड का और आउटलेट टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टीसीआई के बराबर. देयरफॉर दोनों का जो अगर एक्सप्रेशन हम देखें तो क्यू मैक्स कितना आ गया है? हमेशा क्यू मैक्स सी मिनिमम टी एच आई माइनस टीसीआई. इसमें सी मिनिमम टी एच आई माइनस टीसीआई. मतलब क्या हो गया? जो क्यू मैक्स का फॉर्मूला है, क्यू मैक्स का जो फॉर्मूला है, नो मैटर व्हाट कोल्ड फ्लूइड का हीट कैपेसिटी रेट कम हो या फिर हॉट फ्लूइड का हीट कैपेसिटी रेट हो कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्यू मैक्स का फॉर्मूला दोनों के केसेस में सेम आता है एंड दैट विल बी इक्वल टू सी मिनिमम, चाहे जिसका भी मिनिमम हो और दोनों हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के इनलेट के टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर. सो दिस इज द क्यू मैक्स एक्सप्रेशन. इन दैट केस इन बोथ केसेस क्या होगा? इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला Q अपॉन Q मैक्स, Q मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा. और Q क्या हो सकता है? या तो CC के टर्म में या CH के टर्म में. इस केसेस में हमने C मिनिमम किसको लिया है? CC को. हम CC के टर्म में बोलते हैं तो CC CC दोनों कट जाएगा. इस केसेस में C मिनिमम क्या है?
सी एच, तो हम इसको सी एच के टर्म में लिखते हैं, ये दोनों कट गया, तो सिर्फ क्या आ गया, एक इफेक्टिवनेस टेम्परेचर डिफरेंस के टेम्परेचर के रेशियो में आ गया है, टेम्परेचर डिफरेंस के रेशियो में। और ये जब रेशियो हम लोग देखेंगे तो ये वाला क्या होगा, टीसी नॉट माइनस टीसीआई, टीएचआई माइनस टीसीआई, ये मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये हमेशा मिनिमम है, जनरल है, ये मैक्सिमम है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा हो सकता है। इसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक्चुअल कितना के बराबर हो सकता है, मैक्सिमम के बराबर, लेकिन हमेशा कम ही रहेगा। ये क्यू का वैल्यू कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, क्यू मैक्स के बराबर, उससे हमेशा कम ही रहेगा। और ये हो सकता है एक बार भी कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं हो, देयरफॉर इफेक्टिवनेस ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1। सो इफेक्टिवनेस, अब एनटीयू रिलेशन हम लोग डिटरमिन करना चाहते हैं। इफेक्टिवनेस एनटीयू रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि सपोज कोई भी एक जनरल केसेस, या तो हॉट फ्लूइड को या कोल्ड फ्लूइड को, किसी को भी आप मिनिमम लेके चलिए, या अभी नहीं मानना है बाद में मानेंगे, तो चलो एक इफेक्टिवनेस का हमने एक रिलेशन निकाल दिया। अब ये रिलेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो हॉट फ्लूइड के टर्म में या फिर कोल्ड फ्लूइड के टर्म में। अब इसमें से हमने सी मिनिमम किसको माना है, कोल्ड फ्लूइड को, तो हम उसी का एक रेफरेंस लेकर के चलेंगे। तो ठीक पैरेलल फ्लो है। अब पैरेलल फ्लो में हम जब एलएमटीडी को डिराइव कर रहे थे, तो ये एक एक्सप्रेशन हमें मिला था, somewhere in between after the small selecting the smaller differential area, thereafter equating the general Q इक्वेशन, उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया था, दोनों के बीच में एलएमटीडी लॉग के टर्म में एक एक्सप्रेशन आ गया था। इस लॉग डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1, जैसे हमने एलएमटीडी के डेरिवेशन भी किए थे, सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद यहाँ पर से हम लोग डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 का हमने डिफिनीशन रखा, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया है, पैरेलल फ्लो। पैरेलल फ्लो में क्या होगा, डेल्टा T1 THI माइनस TCI और डेल्टा T2 इक्वल टू TH नॉट माइनस TC नॉट। तो ये डेल्टा T1 डेल्टा T2 को हमने इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो TH हमने TH नॉट माइनस TC नॉट डेल्टा T1 हमने डिफिनीशन इसमें लिखा है। इसके बाद हमने इसमें नेक्स्ट स्टेप में सीसी को हमने बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, यूए अपॉन सीसी 1 प्लस सीसी अपॉन सीएच। यह याद रखिएगा, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने पीछे का स्टेप, हमने जो पिछला डेरिवेशन में हमने देखा था एलएमटीडी, वहीं के बीच वाला स्टेप से हमने कंटिन्यू किया है। यहाँ इसके पहले का स्टेप सारा सेम रहेगा, दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड। सो THI इसमें एक सिंपलीफिकेशन हो गया। अब हम क्या जानते हैं, एक हीट बैलेंस हमने जाना था, CH इक्वल टू THI माइनस TH नॉट, ये जनरल हीट बैलेंस है। इसमें से हमने TH नॉट का एक्सप्रेशन हमने निकाल लेना है, तो हमने ये निकाल लिया और एक एक्सप्रेशन आ गया, और इस एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन में इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको इंसर्ट किया, देन वी गॉट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इसको हमने ये इक्वेशन सिंपली हमने इंसर्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसे हमने सिंप्लीफाई कैसे किया है कि TCI को हमने न्यूमरेटर में, लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में हमने TCI को ऐड किया और TCI को समेशन किया है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद नीचे का जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने कॉमन ले लिया है, देयरफॉर इन द राइट हैंड साइड देखिए सारा सब कुछ सेम चल रहा है। लेफ्ट साइड में अब इन दोनों का एक सिंप्लीफिकेशन हो गया, अगेन इसको और सिंप्लीफाइड करें तो ये दोनों इक्वेशन 1 कट के कैंसिल हो गया और इसमें एक एक्सप्रेशन आ गया है। अब इसमें से हम एक इफेक्टिवनेस का डिफिनीशन हमें याद करना होगा। इफेक्टिवनेस का जो डिफिनीशन था वो हमने, देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसके वाला डिफिनीशन, दो डिफिनीशन था, दो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के टर्म में, तब इसके वाला एक्सप्रेशन जिससे मैच कर रहा है वो वाला हम एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे से लिया है। वो किस में हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में, सीसी अपॉन सी मिनिमम। तो उसको हमने क्या लिया है, ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन रेशियो है उसे हमने लेफ्ट साइड में रखा और इसको रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस सी मिनिमम और सीसी। सो जैसे ही हमने इसको इंसर्ट करके यहाँ पे रिमूव किया तो हमें सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया, बाकी सब कुछ सेम रखते हैं। इस केसेस में इसमें इफेक्टिवनेस आ गया, इफेक्टिवनेस को हम लोग बाहर निकालते हैं, बाकी सब कुछ दूसरे साइड ले जाते हैं। जैसे ही हम लोग इसको निकालेंगे तो लॉग को पहले हम लोग तोड़ेंगे और इधर हम लोग एक्सपोनेंशियल के टर्म में ले आएंगे, फिर 1 प्लस है तो इसमें 1 माइनस और इसको हम लोग एक तरफ रखेंगे और फाइनली हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हमें एक ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। That is the effectiveness for the parallel flow, in which क्या आ रहा, 1 minus exponential to the minus QA upon CC 1 plus CC upon CH divided by C minimum upon CC into 1 plus CC upon CH। तो CC और CH क्या है, हीट कैपेसिटी रेट है, जो रेट है
हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का है। अब यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री मान लीजिए, अगर CH को मिनिमम मानेंगे या कोल्ड फ्लूइड को मिनिमम मानेंगे, कोई भी एक को मिनिमम मान लेना है, एक्सप्रेशन विल हैव नो इफेक्ट। सपोज हमने इसमें CC को मिनिमम मान लिया तो क्या हो जाएगा, UA अपॉन C मिनिमम 1 प्लस C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम, C मिनिमम कैंसिल आउट, 1 प्लस C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। अब अगर हम CH को C मिनिमम मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग UA अपॉन C मैक्सिमम 1 प्लस C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम, यहाँ C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम यहाँ पर से आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, C मैक्सिमम को बाहर ले जाएंगे और C मिनिमम को उसमें, C मिनिमम को इसको सिंपली CH को हम लोग बाहर लाएंगे, C मिनिमम को और C मैक्सिमम को अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो फिर से रीअरेंज करेंगे तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन में इसमें से कन्वर्ट करके आएगा जो ये आएगा, सिग्मा 1 minus exponential of minus UA upon C minimum 1 plus C minimum upon C maximum। यही एक्सप्रेशन चाहे जो भी आप लीजिए, चाहे हॉट फ्लूइड को या कोल्ड फ्लूइड को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा अगर हॉट फ्लूइड को C मिनिमम लेते हैं तो कोल्ड फ्लूइड C मैक्सिमम हो जाएगा, अगर कोल्ड C मिनिमम कोल्ड फ्लूइड को लेते हैं तो हॉट फ्लूइड C मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा इन जनरल C मिनिमम और C मैक्सिमम के टर्म में। देयरफॉर इसमें एक यहाँ दो देखिए ग्रुप आ रहा है, तो C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम आ रहा है और एक आ रहा है UA अपॉन C मिनिमम। ये दोनों ग्रुप में हमेशा मिलता है, दैट्स व्हाई दीज टू टर्मिनोलॉजी एक हम अलग से डिफाइन करते हैं। क्या पहला टर्मिनोलॉजी है UA अपॉन C मिनिमम, तो इसे हम लोग NTU के रूप में डिफाइन करते हैं। ये क्या है, C मिनिमम अपॉन C, ये है C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं कैपेसिटी रेट रेशियो। तो इस तरीके से इसको एक और जो है इन दोनों के टर्म में आ गया क्या, पैरेलल फ्लो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU 1 प्लस C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 1 प्लस C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। और ये जो इफेक्टिवनेस आया दैट इज द फंक्शन ऑफ ओनली NTU एंड C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। और ये दोनों हमें इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि चाहे C मिनिमम में CH लीजिए या CC लीजिए, बोथ विल हैव द सेम इफेक्ट। Okay, so this we got, you should have in your mind the expression for parallel flow, expression of effectiveness for parallel flow. In the similar fashion we can get an expression for the counter flow also, so starting from the general principle. So in the counter flow we can have the nomenclature for this one, there is the counter flow, this is the schematic diagram, and this is the temperature time distribution, temperature distribution. Again in the for the LMTD method we have started like that, so here we are starting from like batch you can do, and thereafter after the similar rearranging the step will remain same, only rearrangement and step will rearrangement and the sub terminology will get changed. However after the rearrangement you will get in a similar fashion and final expression, that is the effectiveness for the counter flow. This is the expression for the effectiveness of counter flow, 1 minus exponential to the power minus NTU into 1 minus C minimum upon C maximum, 1 minus C minimum upon C maximum exponential to the power minus NTU 1 minus C min upon C max. So here UA upon C minimum, where the NTU का क्या definition है, UA upon C minimum. So this is the NTU definition. What is NTU? Number of transfer unit. So what is the significance of NTU? Significance of NTU, it represents that if U and C minimum remain same, the heat exchanger which is having higher NTU, the corresponding higher area will required, or we can say that for a specified value of U and C minimum, the value of NTU is measure of the heat transfer surface area. The larger the NTU, the larger the heat transfer. Since heat transfer area is larger, there will be the larger the heat transfer. So this is the counter flow, and we have seen the expression for the counter flow as well as parallel flow of the for the effectiveness. So there is the two special cases. See, suppose there is the phase change heat exchanger, say in the boiler and condenser. What is the expression for the boiler and condenser? In the case of what is the speciality? The speciality is that the one of the fluid is having heat capacity range as a infinite. In the case of boiler and condenser also both. So in the case of boiler, the cold fluid has infinite number of heat capacity range,
In the case of condenser, the hot fluid has an infinite number of heat capacity rate. In both cases, the maximum fluid rate, heat capacity rate tends to infinite. Therefore, the ratio C minimum upon C maximum will become 0. In this case, this will become 0. In that cases, in that cases, what we got an expression C minimum upon C maximum, both we can substitute. Then we will get uh, see, in these cases, this will become 0. So in bracket 1 minus 0, 1 minus exponential to the power minus NTU. And in the in the lower cases, what it will be? 1 minus C minimum minus C maximum will become 0. So 0 into exponential, it will become 0. So finally we will get 1 minus exponential of minus NTU. That will be the value. So in the case of whether it is parallel flow or counter flow, both will have remained same value of effectiveness, as effectiveness of boiler and condenser for parallel flow as well as for the counter flow, it will be equal to 1 minus exponential of minus NTU. Thereafter, uh, in the next cases, if take the regeneration in the case of turbine, where the heat capacity rate of hot fluid as well as cold fluid it remains same. That means the same fluid is changing. The same fluid in the turbine, the region in the steam turbine, what is happening? The steady flow is taking place. That means mass remains same. The same fluid is giving the heat to the same fluid, only the temperature difference vary. So heat capacity rate will remain same because the steam is giving the heat to the steam. So heat capacity rate remains same. Also we had assumptions of the constant heat capacity rate. So overall heat Cc is equal to Ch. In that cases, what will be the, if Cc is the minimum, then Ch will be maximum, and both are equal. That means C minimum and C maximum will become equal, and the ratio will become 1. In that cases, if we can substitute here the C minimum and C maximum is equal to 1, then we will get 1 minus 1 0, e to the power 0 is equal to 1. 1 minus 1 is 0. Here again 0. So we got an expression for 0 by 0. Remember, this is condition for the counter flow only. So again, since we got an indeterminate form of 0 upon 0, therefore we can determine by using the L'Hospital law by taking by assuming C minimum and C maximum as a variable x, and by taking the limit x tends to G1. Thereafter we will get an expression after simplification as NTU upon 1 plus NTU. So for the regeneration, the effectiveness for the counter flow is NTU upon 1 plus NTU. So these two special cases are important with respect to competition, such as in GATE as well as in the engineering services. They directly ask for 1 marks, even in 2 marks sometimes may ask. So let's see what is the variation with respect to NTU. How does it vary? So effectiveness gets varied from say effectiveness is showing on the abscissa and NTU is showing on the ordinate. NTU is showing on the abscissa and ordinate is showing in the ordinate. So limit is 0 to 1. Coordinate effectiveness will vary from 0 to 1, whereas NTU may have the some value. So what we are going to hear, the variation we observe like this one, and there is the variation in C minimum upon C maximum. So this is for the parallel flow heat exchanger. Similarly, in the for the counter flow heat exchanger, this is this type of graph we got. What we are observing here is that in the case of for the same NTU, as the C minimum upon C maximum ratio gets increased, the effectiveness get decreased. Here also for the same NTU, say we have taken value for 4. So for the same NTU value, as the C minimum upon C maximum value gets increased, the effectiveness value get decreased. So these are the conclusion. That means at the same NTU, effectiveness is varying inversely, and at the same C minimum and C minimum in other way, effectiveness is directly proportional to NTU, and these are the valid for the both parallel and counter flow because the same phenomena we observe in both cases. Now, what are the different criteria
for the selection of heat exchanger for a system. So there are the different criteria. The first one is the how much heat transfer you need to require. What are your economy or budget or cost? How much cost you can have. So what is the physical size that you need? What are the pressure drop characteristics? That means pressure drop, how the pressure drop will be directly affected by the pumping power. That means higher the pressure drop, the higher the pumping power you need to supply. So also materials, that means which kind of material you are going to, if you are choosing the material, different material, the different material has different capacity to dissipate heat into environment. So in this way we have completed our theory on this topic, heat exchanger. So now we will move on to the numerical practice for the heat exchanger. So as an engineer, in conclusion, you will face two kind of heat exchanger problem. The first is the need to design a new heat exchanger, and thereafter the second problem, it is the kind of the checking of the performance calculation. So there are the only two variations. The first is the new design calculations, and second one is the to check the performance calculation. So what are the different steps if you have the you have to check the performance? So you need to follow certain steps. That means what are those steps? So first of all, you will have known value of area. You will have not known value of inlet temperature only. So by the help of this one, in this question also, since you are going to check the performance of an existing heat exchanger, so that heat exchanger will have the whether that can be counter flow or parallel flow. That means whether a heat exchanger is counter flow or parallel flow, that also you will have known earlier. So you will have the whether counter flow or parallel flow, it is clearly mentioned. It will be clearly mentioned in the problem. So first step, you need to calculate the NTU. Thereafter, you will need to calculate C minimum upon C maximum. Thereafter, you will have to calculate effectiveness. Then you will calculate Q max is equal to C minimum to THI minus TCI. Thereafter, you will calculate actual heat transfer. Q is equal to effectiveness into Q max. And that, if you are knowing the Q, then by using the energy balance equation, MHCP H THI minus TH naught, MC CPC TC naught minus TCI. So you can determine TH naught as well as TC naught. So this is the standard procedure, standard steps that you should follow during the check of the performance of the heat exchanger. So in this way, we have concluded our topic of the heat exchanger with respect to theory. In the next few lectures, we will practice numerical problem. Thank you very much. Thank you for listening me.